I'm assuming that many people don't know what UPSC is. So, can you tell the audience something about UPSC? So UPSC is a constitutional body in India which conducts exam for a lot of top civil services positions in India. So civil services examination is one of the exams that UPSC conducts, and that was one exam I gave and got through. And what is the eligibility criteria to participate in this exam? There's no defined eligibility criteria. If you have a graduation in any of the streams, you're eligible to give the exam. And how many attempts a student can give to participate in UPSC exam? So attempts vary based on the category you're coming from. So it starts from 6 and goes above that also. So it's different for different people. So, can you tell us about the services that falls under UPSC? Okay, so there are a lot of services that fall under this. So primarily what people are more aware is IAS, IPS, the foreign services, the forest services. But these are the more glamorized ones. There are other services like the trade services. There's defense account service, the defense estate services. So all of these services come under the umbrella of UPSC exams. सो सिद्धार्थ, इस इंटरव्यू को करने से पहले मैंने भी थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में रिसर्च किया एंड ऑल थैंक्स टू गूगल. सो आई केम टू नो कि यूपीएससी एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं. सो आप थोड़ा बताएंगे उन तीनों स्टेजेस के बारे में? श्योर. तो एग्जाम के 3 स्टेजेस प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होता है. प्रिलिमिनरी इज मोर और लेस एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर. मेंस में आपके रिटन आंसर्स होते हैं जैसे स्कूल में लिखा करते थे. An interview is more of a personality test. There's a board, they come talk to you, they get to know you. So these are the main 3 stages of the UPSC exam. So in all these 3 stages, which one do you find is the most difficult or most exciting one? So these are 2 different things. Difficult is different and exciting is different. But yeah, usually I found prelims to be the most difficult. Reason being, prelims is not a selection game. It's an elimination game. So say for example, 8 lakh students are sitting in the prelims exam. Some 12,000 odd people get to write the mains exam. So prelims is a little difficult. Mains has a different set of skills which you need to write the answer. So वो अलग गेम हो जाता है. And again, interview is a different game. सबका अपना मजा है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, and सबकी जर्नी अलग है. एक जस्ट स्मॉल फनी क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क. बहुत सारे ऐसे हम लोग बचपन से जोक सुनते आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी जोक्स आते हैं. यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था. तो क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है यूपीएससी इंटरव्यू में? नहीं, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चीजें आती रहती है, ऐसा कुछ होता नहीं है. कुछ भी बना के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है. बट इंटरव्यू इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. आई वोंट इवन कॉल इट एन इंटरव्यू. इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट. तो ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट आपने पहले क्या किया है, क्या पढ़ाई करी है, जॉब करी है तो क्या करते थे, एंड देन दे आस्क यू कि यार ये करंट अफेयर्स में ये चीज चल रही है, यू नो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट. सो दैट्स व्हाट द पर्सनालिटी टेस्ट इज अबाउट.